Good morning, students. Exercise 15.2. Plot the point on graph paper and verify if they lie on a line. We have given points and we have to draw on the graph paper. How to plot a point on the graph paper? What we have to do? Take a graph paper. Then this is your plane. Then what you will do? Draw a vertical line. You will draw a vertical line. This one. Then one horizontal line, this one, and name this horizontal line, it is called x-axis, and this vertical line is called y-axis. It's y-axis, where two lines, this x-axis and y-axis meet. That point is called origin. 0 0 means x 0, y 0. And in question number 1, if I have to plot point A 4 0, what does this mean? It means x is equal to 4 and y is equal to 0. This first one is x coordinate and this one is y coordinate. I have to plot x 4 and y 0. x4 if it is 1 unit, 2, 3, 4. Its value of x 4 and y 0. y की वैल्यू 0 है, मीन्स मुझे इस साइड नहीं मूव करना है. y नहीं है, 0 ही है. सो दिस इज पॉइंट A 4 0. Then I have to plot B 4 2. Again B42 means x4 y2. x4 means 1 2 3 4. y2 means, now if it is y1 2 3 4 5 6 and so on, y2 x4 y2. देन यहाँ से आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मूव करना है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, लाइक दिस x4 y2 परपेंडिकुलरली, जहां ये दोनों पॉइंट मिलते हैं. सो x4 एंड y1 2 y2. सो इट इज 4 2 point B. It was point A. Then C 4 6 means x4 y6. So 1 2 3 4, again x4 y6 here. So move like this perpendicularly, and it's perpendicular to y-axis y6. और यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं x4 y1 2 3 4 5 6, और इसके भी आपने सीधे देखना है. सो इट्स x4 y6 पॉइंट C. D पॉइंट इज x4 y2.5. 2.5 मीन 2 और 3 के बीच में. दिस वन, इट्स D पॉइंट x4 y2.6. जो पहले है कोऑर्डिनेट वो ऑलवेज x है, क्लियर. एंड सेकेंड नंबर पे वो y कोऑर्डिनेट है, इट इज x कोऑर्डिनेट एंड देन y कोऑर्डिनेट. नाउ आई हैव टू वेरीफाई दैट आर दे लाई ऑन ए लाइन. ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स. Yes, they lie on a line. It's point A, B, C, D. All points lie on a line. Now second, I have to draw P11. Again in second question, I'll draw this one. It's vertical axis, so y-axis. Then this one with scale, my scale is little bigger, so it's y-axis. My y-axis is not clear, so I am drawing again.
its y-axis. I have drawn here y-axis. It's 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unit along x-axis. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6 along y-axis. Now I have to draw P11 means x1, y1. So x1 here, then y1 here. It's 1, 1. Then Q22. It's 2 and 2. Q यहाँ 2 x एक्सिस, y भी 2 था, तो जहाँ मीट करती हैं दोनों लाइन. देन R33. Q22 R33 means 1, 2, 3. X3, Y3. 1, 2, 3. Look. R3 X 1, 2, 3. Y3 1, 2, 3. तो आपको परपेंडिकुलरली मूव करना है and you will meet here. Then S4, 4. 1, 2, 3, 4. S4, Y4. 1, 2, 3, 4. Then move perpendicularly and this point. Now verify, do they lie on a line? Yes. They all point P, Q, R, S lie on a line. It was 4, 4, R 3, 3, Q 2, 2. Again I am telling you, what does this mean? X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. You will write that yes, they lie on a line. Now in third part, I have to plot K23 means X2, Y3. So it's X1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Y1, 2, 3, 4, 5, 6. X2, Y3 means 1, 2. X2, Y3. 1, 2, 3. So move perpendicularly X2, Y3 and they will meet here. X2, Y1, 2, 3. Look here. X2, Y3. Then L, X5, Y3. 1, 2, 3, 4, 5. X5. Then Y3. 1, 2, 3. So X5. Move this side. Y3. Like this. It was point K, L. Then M, X5 and Y5. X5, Y5. Y1, 2, 3, 4, 5. Y5 here. X5, Y5. This point is M. 5, 5. L was 5, 3. Then N, 2, 5. X2, 1, 2. Y5. This one 5. So corresponding to this 1, 2, 3, 4, 5. This is fourth point N. X2 and Y5. Verify that. Plot the following point on a graph paper and verify if they lie on a line. No, they all not lie on a single line. K, L, M, N not lie on a single line. Clear? So our second question is, now our next question is, draw a line passing through 2, 3. 2, 3. One point is 2, 3. Mean X2, Y3.
So 1, 2, x2, y3, 1, 2, 3, this one, x2, y3, and 3, 2. Another point is 3, 2. Means x3, 1, 2, 3, and y2, x3 and y2, x3, y2, and draw a line. I'll draw a line. Now he is saying that find the coordinate of the point at which the line meet the x-axis and y-axis. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको जहां ये लाइन एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, एंड दिस लाइन एक्स एक्सिस को कहां मीट कर रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 50 पे. द लाइन मीट द एक्स एक्सिस, लाइन meets x-axis at 5, 0. And where it meet at y-axis? 1, 2, 3, 4, 5. Line meet y-axis at 0, 5. मीन्स अब x 0 है, यहाँ x है ही नहीं, सिर्फ y की वैल्यू है, तो 0, 5. जहाँ x है ही नहीं तो x 0, y 5. Correct? Now in next question, you have to write the coordinate of the verses of adjoining figure. For example, here I have to write the coordinate of A. At point A is on x-axis. It means y0 and value of x is 2, 0. So its coordinate will be, point A coordinate will be x2, y0. And B, it's 1, 2, 2 unit away from y-axis. So it's 2 and y, 1, 2, 3, 3. So coordinate of B are 2, x, 1, 2 unit, it is 2 unit away. So 2 and 1, 2, 3, y, 3. C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब C y एक्सिस पे है तो इट मीन्स x है ही नहीं, 0, एंड y की वैल्यू 3, बिकॉज x तो यहाँ होगा ही नहीं, एंड y 1, 2, 3, 3 रिटर्न है. सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कहाँ है? 1, 2, 3, 4, x4 है, x4 एंड y 3. So x4, y3. Q, x6, y1. Similarly R, x6, R देखो यहाँ x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है, तो x6 एंड y 5. S में कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए x4, and what about y? y 7. In similar way, you can read the coordinate of this figure also. Next, question number 4 is state true or false. A point whose x coordinate is 0 means x की वैल्यू 0 है, and y coordinate is non-zero, y की वैल्यू है, will lie on y axis. True. x तो है ही नहीं, y की वैल्यू सपोज 2 है तो वो y एक्सिस पे ही लाई करेगा. सो फर्स्ट वन इज ट्रू. सेकंड, अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0. अब y 0 है एंड x कोऑर्डिनेट इज 5. x कोऑर्डिनेट 5 है, 1, 2, 3, 4, 5. वी लाई ऑन द y एक्सिस. फॉल्स, x एक्सिस पे लाई करेगा. y, a point whose y कोऑर्डिनेट इज 0, तो x 5 है, y 0 है, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि y तो 0 है. सो सेकंड वन इज फॉल्स. थर्ड, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0. यस, यहाँ x की भी वैल्यू 0 है,
y की भी वैल्यू 0 है। क्लियर?